Hello students. So today we will discuss about some different type of questions of exercise 2.2. Okay. So here is the question. Three consecutive integers are add up to 51. Okay. Then what are the three numbers? So this type of question is based on consecutive integers. And we didn't know the meaning of consecutive integers. So let us know it. So the meaning of consecutive, okay, this is the consecutive, then integers. As we know, what is an integer? An integer starts always with 0 at the middle and towards its right, 1, 2, 3 up to infinite, and towards its left, -1, -2, -3, -4 up to minus infinite. So these are the set of integers. Now coming to the what is the meaning of consecutive? Consecutive माने कौन? Actually the meaning of consecutive means nearest. ओके बुझियाले कि नहीं? कंसेक्यूटिव माने होची नियरेस्ट माने पाखरे थिबा ओके. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 3 इज एन इंटीजर और नॉट? यस इट इज एन इंटीजर. अच्छा तो यार 3 रो पाखरे के नंबर अछि? 3 को लागी की बा 3 पाखरे एज वी नो 3 जस्ट पाखरे के अछि 4 अछि हो कि नहीं? एंड 4 इज नोन एज द सक्सीडर माने परवर्ती संख्या. ओके एंड 3 जस्ट आगरो के अछि 2 अछि हो कि नहीं? एंड 2 इज नोन एज द प्रीडेसेसर because 2 lies before 3, so 2 is known as the predecessor of पूर्ववर्ती संख्या. ताले हमें कहि पाइबे 3 रो पाखरे थिला नंबर दिरे के गोटे 2 आ गोटे के 4. these are the two nearest number of 3. okay so these 2 3 and 4 are known as consecutive number माने पाखा पाखी 2 रे पाखरे के अछि 3 पाखरे के अछि 4. so these are the nearest or consecutive number. बुझियला? सपोज मैं आउटे क्वेश्चन नेली 10. अच्छा 10 रो जस्ट नियरेस्ट के 11 त जस्ट आगर के अछि 9. so 10 रो सक्सीडर 11 और 10 रो प्रीडिसेसर 9. so these three number are known as consecutive number. हला हमें एमिति भी नहीं परिबा. सपोज 15 रो consecutive number के बतार परवर्ती संख्या रखे 16 रो जस्ट परवर्ती संख्या रखे 17 हां कि नहीं? एमती भी नहीं पाइबा. 17 रो परवर्ती संख्या के 18. बुझियला? सो तो एउटा हम जानि ले जदी x गोटे नंबर हुए बा 3 गोटे नंबर हुए तार सक्सीडर बा तार प्रीडेसेसर हम केमिति पाइबा? +1 कले पाइबा बिकॉज़ 3 + 1 कले ही हम 4 पाइबा. और ठीक सही नंबर यदि हम -1 कर दबा ई नंबर यदि हम -1 कर दबा 3 - 1 देन हम कोन पाइबा 2 पाइबा. सो यदि गोटे नंबर गिवन अछि हमें तार नियरेस्ट दुटा नंबर पाई परिबा कि नहीं? गोटे नंबर माने कर अछि 100 तार जस्ट सक्सीडर जोटा तार परवर्ती संख्या केमति पाइबा 100 + 1 जे केते 101. तार प्रीडिसेसर केमति पाइबा 100 - 1 जे केते हबो 99. बुझियला? so in order to get the consecutive number we have to add 1 with the number or subtract 1 with the number. okay so जदि x गोटे नंबर हुए माने माने करा जाओ ए 100 बदल रे बाय 3 बदल x लिखा है ताहले तार परवर्ती संख्या बा सक्सीडर की हबो 1 ऐड कले हबो. so केते हिजो x + 1. अंडरस्टूड? जदि मु कहबी x जस्ट प्रीवियस रे ता प्रीडेसेसर की अछि सो ताले त मु प्रीडेसेसर बाहर करिवि. ओके then I have to subtract it by 1, so it will be x - 1. ताले तीनटा का नंबर के आसले x - 1 गोटे नंबर x गोटे नंबर x + 1 गोटे नंबर एंड these are the three consecutive number. पाखा पाखी अछंती माने कर ये 2 ही थिबो ये 3 ही थिबो ये 4 ही थिबो ये 10 ही थिले ये 11 ही थिबो ये 12 ही थिबो. बुझियला कि नहीं? these are the concept of consecutive integers. okay so consecutive means the numbers which are nearest to each other are known as consecutive integer. okay so here we have the question
3 consecutive integers are add up to 51. That means we have to take 3 consecutive integers. 3 टा consecutive integer हमर दरकार. ता भीतर हम जे कोन गोटे को चूज कर परिबा. माने कर मु कहली जे 10 गोटे नंबर ताल तार consecutive integer किया हो 9 ही पर गोटे माइनस करले मिल जिवो बा 11 ही पर. बट आमे जानि जे एक्जेक्टली नंबर टा किए जेहेतु आमे जानि ने, सो वी शुड टेक let the number be x. Okay, so I am taking let the number be x. Let the first number, okay, this is the first number. Clear? Now we have to take 3 numbers, 3 consecutive integers. So if x is a number, then its successor is x plus 1 and its predecessor is x minus 1. So I am writing here, so the second number को हमें कितना बा x plus 1 ले पाइबा. Clear? And the third number is equal to x minus 1 भी नहीं होगा, हाँ कि नहीं. तो हमें चाहिए गोटे x आ गोटे सक्सेसर आ गोटे प्रीडेसेसर. गोटे माइनस कर देले 1 आ गोटे प्लस कर देले 1. त तीनटा को नंबर हम पाई गेले कि नहीं इन टर्म्स ऑफ x. नाउ दे आर एड ऑफ मींस दे मस्ट बी एडेड. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what is given, these 3 number will be add. Okay, we have to add these 3 number x plus 1 plus x minus 1. Okay, so let us add them so that the answer is 51. Now this is the algebraic expression that we need. एटा ही algebraic expression जोटा के हम चाहू दले बर्तन तो आको सॉल्व करी x वैल्यू बाहर करिवा. ओके, सो देखो वेरिएबल केतरा अछि तीनटा अछि तो समान हम पाखि आनली. कांस्टेंट केतरा अछि दीटा अछि 1 minus 1 is equal to 51. अच्छा x plus x समान जेहेतु लाइक टर्म सो समान मिसी जिवे. x plus x केते हि जिवो 3x जेहेतु समान ऐड होचंती काहे कि ना समान कोएफिशिएंट 1 अछि यार कोएफिशिएंट 1 अछि यार भी कोएफिशिएंट 1 अछि. 1 plus 1 होची 3 into x plus 1 minus 1 केते 0 is equal to 51. so 3x is plus 0 3x रे 0 ऐड करले केते हो सेही 3x हो. ताले हमें बाहर करना x रे वैल्यू x is equal to 51/3 31 31 37. so answer is 17/1. hence x is equal to 17. ताले हमें पाई गले कि नहीं x रे वैल्यू. so x is equal to 17. clear? now we can easily solve this algebraic expressions and find the value of x. now we have to find the 3 numbers. okay, hence I am writing here, hence first number को हमें कितने दिले x. so x is equal to how much 17. okay, second number की x plus 1 17 1 मिसेगा x plus 1 17 plus 1 that is 18. and third number है x minus 1 that is 17 minus 1 that is 16. hence the 3 numbers are one is 16, other is 17, other is 18. and you can see these 3 are the consecutive number. हाँ कि नहीं पाखा पाखी नंबर कि नहीं. so हमें पाई गले consecutive number. बुझियला. so जे कोन नंबर जदी गिवन अछि तो तार consecutive number पाया गले आइदर +1 करो बा -1 कर दियो. और तुम चाहेला आ गोटे वे भी अप्लाई करि पारिबो. फॉर एग्जांपल 4 जदी गोटे नंबर हुए तार consecutive number टा किए 5 रो consecutive number किए 6. बुझियला. ताले तुम गोटे नंबर को x निए x रो जस्ट परवर्ती संख्या टा किए जस्ट नेक्स्ट नियर नंबर टा किए x plus 1. सिंपल. x plus 1 जस्ट परवर्ती संख्या टा किए माने करो नंबर अछि x plus 1 तार जस्ट परवर्ती संख्या हम केमति पाइबा आउ प्लस 1 करिबा. ताले हम पाखर थिला केते x plus 1 आउ प्लस 1 करिबा केते हि जिवो x plus 2. बुझियला कि नहीं. सो हमें चाहिए b
तीनटा कंजिक्यूटिव इंटीजर को x गोटे x + 1 गोटे x + 2 भी गोटे नहीं परिबा और हमर आंसर सब जगह सेम ही बाहरिबो ओके तुमे जाले x + 1 x - 1 नहीं पारा अच्छा आउटे कथा ए जो तीनटा नंबर हम नेलु x गोटे x + 1 गोटे x - 1 गोटे आ जो सब सानो के हेतिबो कहलो देखो ए नंबरटा हला x एथरे 1 मिसि देले त माने ये 100% बड़ा होबा नहीं काट बड़ा हो या तो बड़ा हो अच्छा एथरे कोन गले x रु किछि दिन से हम माइनस कर देले त सबटो सानो के हेला दिस इज द स्मॉलेस्ट बुझियला कि नहीं केना मध्य जदी x रहला लेफ्ट रे तार प्रेडिसेसर राइट रे तार x सक्सेसर रहयो ये स्मॉलेस्ट ये सब लार्जेस्ट ओके नहीं आ मिडिल के रहयो ये हो मिडिल मैन okay so you can perform the calculation clear so now coming to the question number 2 in question number 2 it has given three consecutive integers okay so first we have to write three consecutive integers it is clear so let us write the first three consecutive integers okay suppose the first number is x then its first consecutive integer is its successor and its predecessor that means the nearest other number is x minus 1 so these are the three consecutive integers now three consecutive integers are such that emiti achanti je when they are taken in increasing order okay so we have to write these three consecutive integers in increasing order means sanoru bodo hela ki nahi so sabutu sano ki am ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛିବା अच्छा कहला वर्तमान सब ए मान को सानो कि मु प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 रे भी कहितली जदी एटा x हुए एथरे कोन कराय छै प्लस कराय छै माने 100% ये बड़ा होबो आ ये माइनस कराय छै माने ये सानो पता सबु सानो हला x - 1 तापर के आसीबो x तापर के आसीबो x + 1 okay so all the three consecutive numbers are written in such a way that they are in increasing order सानोरु बड़ क्रमे सजाय छै okay now and multiplied by 2 3 and 4 respectively okay let us first write the numbers okay let the first number is x yes second number is x + 1 third number will be x minus 1 and these three are consecutive integers now what we will do we have to write it in the increasing order okay so I am writing here they are written in increasing order okay they are written in increasing order सेमानो का में increasing order रे रखी so first के आसे increasing order रखले सब सानो के हबो x - 1 तार टिके बड़ के हबो x तार टिके बड़ के हबो x + 1 now it is clear and multiplied by 2 द्वारा मल्टीप्लाई होबो 3 द्वारा मल्टीप्लाई होबो 4 द्वारा मल्टीप्लाई होबो रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्टिवली माने होची गोटे परे गोटे क्रम अनुसार तो फर्स्ट लेवल लेके अछि x - 1 सो x मा 2 टा कास से मल्टीप्लाई होबो ए x - 1 से तो क्रम अनुसार ओके सीरियली एंड 3 टा कास से मल्टीप्लाई होबो x सहित 4 टा कास से मल्टीप्लाई होबो x + 1 that is why here it is respectively okay so what I am writing multiply 2 with 2 टा कास द्वारा मल्टीप्लाई होबो का सहित x - 1 से तो हम सानो जे x - 1 so it will be केते हो 2 टा मल्टीप्लाई 2 into x - 1 और डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर दो परिबा ना नहीं तले हला केते 2 into x minus 2 into 1 तले केते हेला 2 into x जे केते 2x minus 2 clear and 3 multiply 3 with का द्वारा मल्टीप्लाई करा हो 3 को x so 3 into x that is 3x so गोटे वाला 2x minus 2 गोटे वाला 3x तापरे 4 is multiplied with x plus 1 so 4 into x plus 1 again distributive apply कर दे पाएगा so 4 into x plus
4 into 1 that is এটা কেতে হলা 4 into x 4x 4 plus 4 into 1 4 তাহলে বুঝি হলা কি নাই বর্তমান আমরা তিনটা নাম্বার পাই গলে 2 और 3 और 4 मल्टीप्लाई कर देला पर हमर बाहरला 2 मल्टीप्लाई कला पर ठीक बाहरला 3 मल्टीप्लाई कला पर बाहरला eta 4 मल्टीप्लाई कला पर बाहरला देन क्वेश्चन दे एड ऑफ से माने को ऐड करा जो मिसा जो को माने मिसा जो देखि दबा को माने मिसा जो मैं तो लिखि दउची हला हमें मिसेबा एटा को 3x को 4x plus 4 okay so मिसेबा I am writing here according to question so को मान को मिसेबा देखि दियो 2x minus 2 plus केते 3x plus 4x plus 4 these three numbers will be add up to give 74 now I think it is clear okay so now the variable term किया देखिबा हला देखो 2x गोटे variable term 3x गोटे variable term 4x गोटे variable term तो they should be come closer hence हमें पहले 2x plus 3x plus 4x पाखे जानले ताको ब्रैकेट कर देले काहे आंसर लाइक टर्म ता पर देखो कोन अछि माइनस एटा कांस्टेंट टर्म ता पर अछि प्लस 4 is equal to 74 okay now এটা দেখো মিশে গলা 4 plus 3 7 7 plus 2 9 so 9x okay now एपटे रहला 74 एदिटा कांस्टेंट कि नै कांस्टेंट को हमें आरो पट को नबा जेते -2 राइट हैंड साइड को जीवो कोन जी +2 हां कि नै तो +4 राइट हैंड साइड को जीवो कोन जी -4 हे जीवो एटा को माने रखिबो ओके सो केते हे गला 74 plus 2 जाके 76 4 इधर -4 है केते हे गला 72 hence we get what we get hence we get a writing here okay hence we get 9x is equal to 72 and we have to find the value of x so x is equal to 72 by 9 9198 केते बाहला x value बाहला hence I can write x is equal to 8 so this is the result of x so हमें सॉल्व कर देले बुझियला बट हमें कोन बाहर करेगा फाइंड द नंबर्स से तीनटा का नंबर की फर्स्ट नंबर टा लेले x तापर x प्लस 1 तापर x minus 1 so I am writing first number is x is equal to केते बाटला 8 it बाहर जाए second number is x plus 1 that is 8 plus 1 is 9 third number is x minus 1 that is 8 minus 1 is 7 so देखा ताले कौन कौन नंबर वाला गोटे 7 वाला गोटे 8 वाला गोटे 9 वाला तीटा कंसेक्यूटिव नंबर कि नहीं बुझियला कि नहीं सो एई प्रकार रे हम एटा को सॉल्व कर दे पारिबा किंतु तागर हम बुझिया पड़िबे जे रेस्पेक्टिवली माने कोन एंड सेकंड थिंग सेमन को इंक्रीजिंग ऑर्डर रे लिखिबा सानर बड़ क्रम लिखिबारा क्लियर लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3 here given that the sum of three consecutive multiples of 8 is 888 okay so here is given sum of which three consecutive multiples here is a term consecutive multiples okay in question number 1 and 2 we have discussed about consecutive integers ता माने पाखा पाखी नंबर बुझिला नै consecutive माने कोन नियरेस्ट ओके अब इंटीजर माने होची कोन नंबर्स ओके नियरेस्ट नंबर माने किए 1 नो किए 2 3 4 5 these are the consecutive numbers but here we have to find the multiples consecutive multiples nearest multiples so first हम जानिया मल्टीपल का कहबा ऑलरेडी हमें पढ़ी छे बस तापर किछि रिकैप कर दबा सपोज आई एम टेकिंग 5 एज अ नंबर ओके so 5 रा मल्टीपल्स किए बुझियाला दुईटा जिंस होची गोटे होची मल्टीपल्स अनदर इज फैक्टर्स मल्टीपल्स माने होची दीज आर द काउंटिंग ऑफ टेबल्स हमें टेबल काउंटिंग सीखे ना नहीं दीज आर द काउंटिंग ऑफ टेबल्स सो 5 रा मल्टीपल्स किए ना 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 ja 25 and so on so these are the multiples of 5 and suppose I am taking the multiples of 8
So 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 3 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 8 6 ja 48. So these are the multiples of 8. So जानी गला पे वर्तमान ये multiple हमें कहाँ कोएगा? So these are the counting tables. But one thing here you can see. So यदि 5 रा प्रथम multiple टा किया होची निजे 5 होची कि नहीं? अच्छा second multiple टा किया होची 10. 10 हमें केमती का पाएगा? आमे जदि एई 5 रे आ गोटे 5 मिसई दबा तले हम पाइ जबना 10 हां कि नहीं मैं एमिति लिखुची आगे लिखुची 5 रे कोन करबा आ गोटे 5 मिसई दबा तले हम तार सेकंड मल्टीपल पाइ गले। अच्छा थर्ड मल्टीपल केमति पाइबा देखो थर्ड मल्टीपल हम केमति पाउ ए ठीक 10 रे हला 10 रे पुण कोन करबा आ 5 मिसई दला हम 15 पाइबा नी 20 केमति पाइबा ना 15 रे आ 5 मिसई दबा 20 बुझियाला सेमति का 8 देखो फर्स्ट नंबर होती 8 हुए 16 बाय सेकंड मल्टीपल हम केमति पाइबा आ गुटे 8 मिसे दबा 16 पाइ गले 24 केमति पाइबा ना 16 जो प्रीवियस नंबर 16 प्रीवियस नंबर सेतरे पुणी 8 मिसे दबा 24 32 केमति पाइबा ना तार प्रीवियस नंबर जे 24 सेतरे पुणी 8 मिसे दबा हला कि नहीं। सो एउटु गोटे जिंस हमें क्लैरिफाई हेले मल्टीपल्स केमति का पाइबा माने कर हम बाहर करी 5 रा मल्टीपल यदि गोटे नंबर 5 रो फर्स्ट मल्टीपल x हुए ताल तार सेकंड मल्टीपल हम केमति का पाइबे ना x रा 5 मिसे दे देखो ना 5 रा 5 मिसे दे पाइ गेल 10 तापर मल्टीपल हम केमति पाइबे ना तार प्रीवियस नंबर जे के 10 10 रे पुनी आ 5 मिसे दबा तार प्रीवियस नंबर के x + 5 तले आ 5 मिसे दियो हैला पुनी ता परवर्ती जो हम मल्टीपल खोजिबा नियरेस्ट क्या हो ना तार प्रीवियस नंबर के ये एथरे पुनी आ 5 मिसे दियो एडी दिला 5 थिला आ 5 मिसे दिला पाइबा। सो एमिति हमें कैलकुलेट करि पाइबा नियरेस्ट मल्टीपल ता जदि कहआ जाय व्हाट आर द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 5 रो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के आगो x तापर x + 5 तापर x + 5 + 5 ओके। सो similarly we can take if 8 is a number तार तार फर्स्ट मल्टीपल के 8 सेकंड मल्टीपल हम केमति पाइबे ना 8 रे आ कोन करिवे आ 8 मिसे देबे थर्ड मल्टीपल केमति पाइबे ना 16 ता प्रीवियस नंबर रे आ 8 मिसे देबे हां कि नहीं। सो यदि फर्स्ट मल्टीपल x हुए 8 रो सेकंड मल्टीपल हम केमति पाइबे आ 8 मिसे देबे कोठी मिसे कोथे 8 मिसे ता प्रीवियस नंबर रे। अच्छा ए मल्टीपल हम केमति पाइबे ता तार प्रीवियस नंबर जे x + 8 सेथरे कोन करिवे आउ 8 मिसे देबे एई नंबर टा केते पाइबा को चाहूची कोन करिवे ना यार प्रीवियस नंबर के ये एथे आउ 8 मिसे देबे एति +8 मिसे देबे। सो पाइछ ना नहीं कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। सो दीस आर द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स पाखा पाखी दिबा मल्टीपल्स बुझियाला। सो दिस इज अबाउट मल्टीपल्स एंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल तीनटा कंसेक्यूटिव मल्टीपल हमें बाहर करे कहार बाहर करबा 8 रो बुझ पाइलो ओके। सो लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ x इज ऑफ 8 इज x हमें जानिनो जे केते नंबर से मल्टीपल नै केते नंबर से स्टार्ट कर जान जे हम जानिनो। सो यदि माने कर हम प्रथम मल्टीपल टा को x नेली देखो एटी यदि प्रथम मल्टीपल टा को x नेली मते केतरा मल्टीपल बाहर करता है तीनटा तो सेकंड मल्टीपल टा केमति बाहर करिवि ए मल्टीपल टा दादा प्रीवियस नंबर 8 ऐड कर दे हां कि नहीं। सो आई एम राइटिंग हियर द सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज x + 8 हां कि नहीं। जदि मु थर्ड मल्टीपल बाहर करिया पे चाहिए एटा कोन करिवि तार प्रीवियस नंबर जे सेतरे पुनी 8 मिसा दे माने x + 8 इज प्रीवियस नंबर +8। सो आई एम राइटिंग थर्ड मल्टीपल of 8 is it has a previous number +8 बुझियाला। so these are the 3 consecutive multiples of 8. now coming to the question what is the question the sum of 3 consecutive multiples ए जो तीनटा consecutive multiple पाइले से मानकर कोन बाहर करबा हमें sum। so according to the question what is given sum of 3 multiples of 8
8 ର प्रथम मल्टीपल किए x, सेकंड मल्टीपल किए x plus 8, थर्ड मल्टीपल किए x plus 8 plus 8 से मानकर कोन बाहर करिया सम इज इक्वल टू केते हबो 888 888 ओके नाउ इट इज algebraic expression and then now we have to solve it so देखो एटी वेरिएबल केता तीनटा so make them closer and put bracket over them plus constant के रहला 888 so 8 plus 8 plus 8 is equal to 888 x plus x plus x coefficient 1 here coefficient 1 here coefficient 1 केते हबो 1 plus 1 plus 1 3x plus 8 plus 8 plus 8 केते 8 जुक्त 8 जा केते 16 16 plus 8 जा 24 is equal to 888 now 3x ର वैल्यू केते बाहरिबो एटा कांस्टेंट एटा राइट हैंड साइड को पळेबो ताले कोन हेजिबो प्लस थिला माइनस हेजिबो सिंपल hence we get 3x is equal to 8 4 ja 4 8 2 ja 6 864 now we can find the value of x x is 864 by 3 3 1 3 2 ja 6 3 4 ja 3 8 ja 24 3 8 ja 24 so answer is 288 and hence we get x is equal to 288 ताले बुझियला न नाही x ର वैल्यू केते बाहरला 228 okay so now students we have to find the multiples तीनटा को मल्टीपल के बाहर करिवा अच्छा फर्स्ट मल्टीपल टा हमें किए नेथिले look at this the first multiple is x so first multiple of 8 is x x माने किए 288 हला सेकंड मल्टीपल का नेथिले x plus 8 x माने के 288 से 8 मिसेबा 296 now it is clear third multiple किए लिखले ना x plus 8 plus 8 एटा देखते कि नहीं so x माने 288 plus 8 plus 8 तीनटा को मिसे दवा हैला so तीनटा को मिसेले हबो 304 finally we got the answer that first multiple is 288 second multiple is 296 and third multiple is 304 okay so एमिते हमें बाहर कर दे पाएगा